Welcome dear students on DCA online platform. I am Sunil Kakde, faculty in mathematics. Now in this session we will discuss very important short tricks, that is in the form of type 5 quadratic form, that is integration is of the type 1 upon ax square plus bx plus c. If the value of 4ac minus b square is greater than 0, if the value of this term will greater than 0, then the direct short tricks is integration, that will give the answer 2 upon a root of 4ac minus b square into tan inverse ax square plus bx plus c ka derivative. Meaning of dash is here, differentiation of this ax square plus bx plus c upon a root of 4ac minus b square. This type के questions AD में पूछे जाते हैं. Now see here, let's first try to find the value of a, b, c. We required here a, b and c. So the value of a, b, c, a is equal to कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा. a is 1, b is 4 and c is 5. So first find out the value of 4ac minus b square. So 4ac minus b square is equal to 4 into a is 1, c is 5 minus b is 4 square. It gives 4 into 5, 24 square, 16. It gives 4. The 4 is greater than 0. That means the value of 4ac minus b square is greater than 0. So let's, by using this short tricks, integration 2 upon a root of 4ac minus b square into tan inverse ax square plus bx plus c. I am writing here first formula, ax square plus bx plus c, differentiation upon a root of 4ac minus b square. Now put the values. So 2 upon the value of this 4ac minus b square, that is 4. So ये आ जाएगा root of 4. The value of 4ac minus b square यहाँ फाइंड आउट किया था, कितना आ रहा है 4. तो यहाँ 4 पुट अप कर दिया into tan inverse inside the bracket derivative of this term. So I am writing the first given term as it is. So x square plus 4x plus 5 divided by 4ec का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया, कितना आता है ये 4 आता है. So now 2 upon root of 4 is 2 into tan inverse root. So take the derivative of this term. What is meaning of here dash? Differentiate this function, that is x square का derivative 2x plus derivative of 4x is 4 and 5 का derivative 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. Divided by root 4 is 2. 2 to get cancel out, तो ये आ जाएगा, that is tan inverse inside the bracket. If I take 2 common from here, it gives 2 in bracket x plus 2 upon 2. So 2 to get cancel out, we get the answer is equal to tan inverse inside the bracket x plus 2, x plus 2 प्लस यहाँ इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखना जरूरी है, प्लस c आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट का c. यहाँ पर भी लिखना जरूरी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो नोट डाउन दिस. सेम टाइप यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इन द फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, उसमें क्या था, this 4ac minus b square is greater than 0 type था. In this type 4ac minus b square is less than 0. It means the value of this term will be negative.
So that is answer will be 1 upon root of 4ac minus b square into log of लोअर फैक्टर अपॉन हायर फैक्टर। जो इक्वेशन हमारे पास है उस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करना है, उसमें से लोअर फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा और हायर फैक्टर आएगा डिनोमिनेटर में आएगा। दैट इज इन लॉग ऑफ लोअर फैक्टर अपॉन हायर फैक्टर। सो एग्जांपल आई एम रिटन हियर इंटीग्रेशन 1 upon 3x square plus 13x minus 10. So first find out the values of a, b, c. So value of a is 3, b is 13 and c is minus 10. So first find out this value of 4ac minus b square. 4ac minus b square. So 4 into a is 3 into c is minus 10 minus b square, that is 13 square. It gives minus 40 into 3, that is minus 120 minus 13 square is 169. So it gives minus 289. The value of 4ac minus b square is minus 289. So by using this, but we required first here factors, lower factor upon higher factor we have to find out. So जो इक्वेशन मेरे पास है उसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं फैक्टर फाइंड आउट देखो कर रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो फैक्टर्स कैसे आएंगी 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस 30 आएगा। सो प्रोडक्ट आता है माइनस 30 एंड वी रिक्वायर्ड एडिशन प्लस 30। सो कौन से फैक्टर आ सकते देखो 15 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 30 एंड 15 माइनस 2 वी गेट 30। सो द फैक्टर्स विल बी आई एम फाइंडिंग हियर फैक्टर्स 3x square plus 30x plus 10 is equal to 3x square plus 15x minus 2x minus 10. Take from here first two terms, take 3x common. If I take 3x common, it gives x plus 5. Take minus 2 common. If I take minus 2 common, it gives x plus 5. So x plus 5, x plus 5, x plus 5 take common in the next 3x minus 5. Now इसमें से आपको ये देखना है कौन सा फैक्टर हायर रहेगा, कौन सा फैक्टर लोअर रहेगा। So factors of this term will be x plus 5, 3x माइनस 5। इसमें से आप देखेंगे केयरफुली तो x प्लस 5 आपका ये रहेगा हायर फैक्टर रहेगा एंड 3x माइनस 5 ये लोअर फैक्टर रहेगा। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, x वैल्यू आप कुछ पुट कर देंगे तो यहाँ x का वैल्यू सपोज मैंने 1 पुट अप किया, 1 पुट के x का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 5 6। इफ आई पुट हियर x इज इक्वल टू 1 तो ये कितना है देखो आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2। इट मीन्स x plus 5 is higher factor than 3x minus 5. So the formula is the short tricks. I'm written here 1 upon root of 4ac minus b square. इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है। दिस वैल्यू इज लेस देन 0, निगेटिव में आ रहा है तो ये जो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगा लेस देन 0 रहेगा। सो माइनस 289, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो आपका आंसर यहाँ निगेटिव में आ रहा है ना उसको आप पुट करना है मॉड में, मतलब उसको करना है आपको पॉजिटिव। रिमेंबर दिस, नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ आंसर मॉड का मतलब रूट का आंसर तो कभी निगेटिव पॉसिबल होता क्या, वो नंबर इमेजिनरी में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, पुट इन द मॉड, उसको आपको करना है प्लस, टेक दिस वैल्यू इन प्लस में लिखना है उसको। सो mod of minus 289, this is in mod, into log of
मॉड ऑफ लोअर फैक्टर अपॉन हायर फैक्टर्स। लोअर फैक्टर यहाँ पे 3x minus 5 अपॉन हायर फैक्टर इज x plus 5 plus c। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना है देखो, मॉड ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड, टेक ओनली पॉजिटिव साइन, तो रूट ऑफ -289 उसको लिखना है पहले आपको, रूट ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड, टेक पॉजिटिव साइन, 289 यहाँ आ जाएगा ये 289 इंटू लॉग ऑफ 3x minus 5 upon x plus 5 plus c, that is root of 289 का आंसर आता है 17, so it gives the final answer integration 1 upon 17, this root आता है 17 का into log of mod of 3x minus 5 upon x plus 5 plus integration constant c। Now this question is very important, यहाँ ध्यान दीजिए केयरफुली। यहाँ जो आपका आंसर निगेटिव आता है ना, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ मेरा आंसर निगेटिव आता है तो आपको ये जो रूट में है उसको आप पुट करना है मॉड में। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो यहाँ आप गड़बड़ कर देंगे, बोलेंगे तो माइनस साइन आता है, तो रूट का तो माइनस पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो रिमेंबर दिस, यहाँ पे आपको मॉड पुटअप करना है और ये वैल्यू आपको लेना है प्लस में लेना है। नोट डाउन दिस, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।